Well, definitely it's a magazine which updates you with what's happening everywhere. And up something always when I go to the airport, and that's one magazine I would always pick up. It keeps me updated with the entertainment industry very well, for sure. Any particular magazine you read every day or something? Frankly, I'm not much into reading, but if keeping my profession in mind, I'll always pick up an entertainment magazine for sure. Upcoming project, I'm a face of a brand, so I can't disclose it right now. The moment it happens in month of June, I'll be able to speak about it. And my fashion weeks are on, and I'm also a ramp-up trainer for Miss India and Miss Diva, so I'm in charge for the delegates who are going to be representing India very soon. So that's keeping me busy. And there's something else which is lined up, but once everything comes on contract, then I can talk about it. Thank you. Good evening. Done? Thank you very much. मैम सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे हेलो मैगजीन के बारे में, किस तरह से एसोसिएटेड है आप? Hi, I'm the editor of Hello Magazine. So Hello Magazine आज इंडिया की सबसे टॉप और प्रीमियम लाइफस्टाइल मैगज़ीन है जहाँ पर हम सेलिब्रिटीज़ और लाइफस्टाइल्स कवर करते हैं. हम सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, सारे इंडिया में टॉप सेलिब्रिटीज़ और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को हमने कवर किया है. And being a part of the Times of India group, we really are India's #1 magazine today. I feel very proud because today I have launched the magazine, so I've seen it grow from where it was 10 years ago to where it is today, and it is only way to go. So from just being a magazine today, we are expanding into launching a coffee table book, which is Hello Strength. Jewelry is Hello Strengths. We've always been showing beautiful jewels from across the world. So today we put it all together in a beautiful coffee table book. हेलो मैगजीन से ऐसी कौन सी बात है जो सारे मैगजीन से हेलो मैगजीन को अलग करती है? हम सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं हैं, हमारी सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड से हटकर भी हैं, और जिस तरह के सेलिब्रिटीज़ फ्रॉम अंबानीज टू बिरलास टू गोदरेज हम कवर करते हैं, आज तक किसी और मैगजीन ने नहीं किया. इन सब सेलिब्रिटीज़ को हम वी हैव एक्सेस टू ऑल दिस सेलिब्रिटीज़ एंड वी आर वेरी प्राउड. और हेलो ही एक ऐसी मैगज़ीन है जो रॉयल्टी को कवर करती है, और एवरी रॉयल फैमिली इन इंडिया हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय हेलो मैगज़ीन. दिस इज़ द जी. आप समझ सकते हैं कि डीलिंग विद सेलिब्रिटीज़ इज़ नॉट ईजी. When you deal with a celebrity, you're dealing with a lot of ego hassles along with it, you're dealing with a lot of issues. So keeping all that in mind, it has been a delicate journey. We've had to tread very carefully. We launched with the Liz Hurley की wedding अरुण नायर के साथ जब हुई थी, वो हमें एक्सक्लूसिव मिला था, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, तो उसके साथ हमने मैगज़ीन लॉन्च की थी. इट वॉज़न्ट ईजी बिकॉज इंडिया में ऐसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था कि सेलिब्रिटी प्योर मैगज़ीन होती. अभी तक सिर्फ फिल्म मैगज़ीन्स थी या फैशन मैगज़ीन्स थी या विमेंस मैगज़ीन थी. तो बहुत डेलिकेटली हमें अभी तक हमारी जर्नी, अब तो ऑफकोर्स वी आर वन ऑफ द एस्टेब्लिश्ड मैगज़ीन, पर हमें मालूम नहीं था कि हाउ टू हैंडल द ईगोज, हाउ टू हैंडल एंड celebrity. So that has been challenging. There were times when a celebrity did get upset on the way we covered it, but we learned our lessons from it. Thank you. Thank you very much. Thanks.
jewelry, and I think Indian jewelry has its own charm. I think no matter people talk about Italian designs and about French designs, but with Indian there's a certain uniqueness which you have, and I think this is a great event to be, especially being a girl, and we all love jewelry, so yeah, I'm super excited. Someone gifted you or something? Actually, no, I would share one thing. The first jewelry that I bought for myself was with my first paycheck, and it was this little diamond pendant, a 2-carat diamond. And yeah, that is my only piece of jewelry that I bought for myself. But it's very special because it was my first. So yeah. आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा बिकॉज राज का टीज़र ऐसा है कि कुछ रिवील ना करते हुए भी रिवील कर रहा है. सो आई थिंक दैट्स द आइडिया. लोग चाहते नहीं है कि लोगों को समझ आए अभी कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, बस थोड़ी सी आपकी क्यूरियोसिटी आई थिंक वो चाह रहे हैं कि बढ़ाएं. And yeah, so basically secrets are not good and secrets destroy relationships. That's the basic concept of Ras. Thank you.